Hello students, this is the revision sheet second. इसके solution और hint मैं यहाँ पे explain कर रहा हूँ. You need to follow them. So let's consider the question number 1. This is here. It says find the ratio of magnitude of angular momentum of rolling disk. ये disk है जो roll करता हुआ जा रहा है about point O which is on the ground and about point P which is on the disk as shown in the figure. So दो angular momentum calculate करने हैं और उनका ratio बताना है. तो L about O calculate करेंगे एंड यूल फाइंड कि उसके लिए दो टर्म आते हैं. कुछ ऐसा हम लोग लिखेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी ऑफ द सेंटर ऑफ मास के लिए वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये गिरेगा जाकर के विच इज इक्वल टू आर. सो यूल फाइंड दिस इज एम वी द मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर और ये इस सेंस में जाएगा. आई ओमेगा की भी सेंस सेम जा रहा है इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे. आई सी एम बेसिकली आई सी एम इज गोइंग टू लाइक हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. So this will be the total angular momentum about point O, ICM into omega. Now V is equal to R omega है, so R omega को हम V replace कर सकते हैं, so ये बन जाएगा half MVR. दोनों add up हो गए, so that will be like 3/2 MVR. So that's angular momentum about point O. ये अपना में एक simple सा point है. दूसरा angular momentum about point P. Now this P point is on the disk. तो जब हम P के respect पे जाएंगे, so you'll find कि उसका translational motion नहीं होगा. So P के about you'll find this will be having pure rotational motion. क्योंकि P point is on the disk, so P should not move because with respect to P we are working, right? So P को अगर रेस्ट पे रखना है तो P के about purely rotation दिखा सकते हैं, translation नहीं रहेगा. रोटेशन के लिए same angular velocity omega रहेगा. So LP will become equal to I. This is going to like I about P into omega, and that will be in the same sense. So magnitudes निकालने हैं. डायरेक्शंस को हम लोग अलग कर दे रहे हैं. बाय द वे उनकी डायरेक्शन भी बराबर जाएगी. आई पी कितना आ जाएगा? सो आई सी एम पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर. आई सी एम होगा आपके लिए हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर. डी की मतलब हो गया आर बाई टू का होल स्क्वायर. सो दिस इज आई इंटू ओमेगा. फर्दर सिंप्लीफिकेशन, सो दैट विल बी लाइक 1/4 एंड दैट इज 1/2. दोनों को मिला देंगे 3/4. सो दैट विल बी लाइक 3/4 एम r square into omega, which could be written like 3/4 mvr because v is equal to r omega. Now ये L about O मैग्नीट्यूड है, ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट P का मैग्नीट्यूड है. दोनों का रेशियो निकालना है तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे. जैसे डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 2:1. 2:1. A option will become the correct response. Now let's consider the question number 2. Question number 2 says the adjacent figure shows a non-uniform meter stick AB having linear mass density which is directly proportional to x. Lambda naught is a constant. Distance x is the distance from point A, and you can read it. In the first experiment, F is applied at the point B and pivoted at A, and the second experiment, force is applied at A, pivoted at B. And it says कि इन दोनों केसेस में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा ए है, यहाँ का अल्फा बी है, तो अपने को अल्फा बी कंपेयर करना है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर है. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. सो इन दोनों केस के लिए आप अप्लाई करोगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. सो टू गेट अल्फा यू विल फाइंड दिस हैज टू बी लाइक टाउ डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इन आइदर केस दिस इज अ मीटर स्टिक, सो लेंथ इज गोइंग टू बी 1 मीटर. सो टॉर्क की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू एफ इंटू 1. परपेंडिकुलर है इसलिए एफ के इक्वल आ जाएगा. So torque is identical. That means we will say कि angular acceleration will be inversely related with moment of inertia. And we know कि इसमें जो मास है वो b की तरफ ज़्यादा है, और इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो I about A आएगा. इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो I about B आएगा. इस केस में अधिकतर मास जो है एक्सिस के पास में है, एंड यहाँ पर अधिकतर जो मास है एक्सिस से दूर है, इसलिए आप पाओगे कि आई ए विल बी ग्रेटर देन आई बी. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि आई ए मस्ट बी ग्रेटर देन आई बी, which will say कि angular acceleration in this case is going to be smaller as compared to this. That means alpha of A should be less than alpha of B. Hence, C option will be the right response. Now, question number 3. Let's read it. It says a smooth hemisphere of mass M kept on a smooth surface. Block of smaller mass which is in the top of on the hemisphere. ऐसा फिगर में दिखाया गया. Slightly disturb करेंगे इसको. जब ये थीटा एंगल पर आ जाएगा उस समय we need to find the relation between V and V naught. V naught is the velocity of hemisphere and V is the velocity of the block with respect to the hemisphere.
So let's say, think about this. This came here. This block is now at this location. Then you'll find there will be a velocity, and this will have this velocity. Now these velocities has to be written carefully, or has to be read carefully. ये जो velocity है hemisphere का, that's a v naught with respect to ground, and this velocity is v, which is with respect to the hemisphere itself. Now इसके हम components कर सकते हैं with respect to hemisphere, this and that. If this is angle theta, then you'll find this theta, this 90 minus theta, so this has to be theta. And you'll find this is going to be like v cos theta, and this will be v sin theta. Now this is the velocity with respect to hemisphere. Now, so what will be the velocity with respect to ground? So we know the velocity of block with respect to hemisphere is going to be velocity of block minus velocity of hemisphere. We are looking for velocity of block with respect to ground, right? So that's going to be velocity of block with respect to hemisphere plus velocity of hemisphere. इनको अगर आप एडअप करेंगे, so this will be like v cos theta, x component केवल हम लोग watch कर रहे हैं, right? So this is going to be I cap plus v naught minus I cap. So ultimately it could be written like v cos theta minus v naught in the direction of I cap. So this is the velocity of the block with respect to ground, or this is the velocity of hemisphere with respect to ground. Now simple concept that we can apply in the x direction is linear momentum conservation in x direction. Why? Because there will be no force acting in the x direction, frictions are absent ना. So initial momentum was 0. फाइनली के लिए आप बोलोगे कि जो कैपिटल एम मास है वो वी नॉट से नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस जो स्मॉल एम मास है एंड दैट इज मूविंग विद वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट. ना स्मॉल एम और कैपिटल एम दे आर लिंक टुगेदर, सो स्मॉल एम की वैल्यू कैपिटल एम बाई 3 रख सकते हैं. सो ये बन जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू 1/3 वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट. यू कैन सिंप्लीफाई दिस स्टफ टू फाइंड वी नॉट. जब हम वी नॉट को कैलकुलेट करने के लिए इसको इस साइड लेकर के आएंगे, देन यू विल रियलाइज इट विल बिकम 4/3 वी नॉट इज इक्वल टू 1/3 वी कॉस थीटा. दैट मीन्स वी नॉट टर्न आउट टू बी इक्वल टू वी कॉस थीटा डिवाइड बाई 4. 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी नॉट इज इक्वल टू v/4 कॉस थीटा. A option matches perfectly, hence you will call as correct response. Now question number 4, let's read it. A cylinder of mass m radius twice r has a groove of radius r. A block of mass m is hung from the circumference of the cylinder, and the cylinder itself is hung from the support using the groove. If the acceleration of the center of mass of this cylinder is a1, acceleration of block is a2 downward as shown over here. And if there's a relation, we are looking for the relation between a1, a2 and alpha. Alpha is the angular acceleration of this cylinder. These are the options to be looked at. ये constant motion से related है. So इस point को अगर हम catch करेंगे, ये point का इस string के लिए, then you'll find इस string ये raised पर है, तो इसका total acceleration 0 आना चाहिए. और as per this translation and rotation, you'll find this will have acceleration a1 downward, r alpha upward, and it must be at rest. That implies a1 must be equal to r alpha. If needed, we will use this. Now इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे. So this point is moving downward with acceleration a2, or as per this rotation stuff, it will have acceleration a1 downward, and it will have r alpha, where r is twice r, upward direction में. तो इसका total resultant downward आना चाहिए a2. That's how we get the constraint. So इसका total resultant is equal to this thing. So we will write like a1 minus 2r alpha is equal to a2. ऐसा कोई option होना चाहिए, either this or related stuff. So we will find that B, which is a1 minus 2r alpha is equal to a2. That matches correctly. Hence we will mark that B is a correct response. After this 4, let's go to the fifth one. Fifth one is this. It says a T shape of object with the dimension as shown here. A force F is applied at a point which is P, and it is parallel to this AB, and the object performs only translation of motion without rotation. अगर without rotation जाना है, pure translation करना है, तो this force must be applied at the center of mass, right? So P का location पता करना, that means we need to work for center of mass. AB का center of mass के mid point पर होगा m mass. इसका rod का center of mass इसके mid point पर होगा 2m. So ये distance आपके पास होगी L, क्योंकि ये twice L थी. और force आप यहाँ कहीं लगा रहे हो, so that must be the combined center of mass.
एंड वी नो कि ये 1:2 मास है, तो 2:1 रेशियो पे डिवाइड करेगा. सो सिंस ये 2:1 रेशियो में है, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस विल टर्न आउट एज L/3. So this force must be applied at L/3 from the center of this. इसने पूछा हुआ कि C के पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा, तो सेंटर से डाउन साइड L होगा. तो टोटल आंसर अपने को देना है L plus L/3. दैट मीन्स 4L/3 from the point C. This is the location where this force has to be applied in order to have purely translation motion without rotation. Thank you.